from accessing the capital market by the order of SEBI are naturally are not allowed to have an IPO. Correct? Suppose Mr. Vikrant is a broker or a particular kind of investor, and because of certain malpractices in securities market and capital market, SEBI has debarred me from accessing the capital market. Naturally, I will not be able to have an IPO as a promoter. In other way, suppose a corporate entity, a company, Vikrant Consultancy Limited, a company is debarred by SEBI for accessing the capital market. Automatically, the promoters and directors of such company are also debarred. The same logic for IPO ineligibility is applicable for FPO also. So if you are debarred, you are not able to have an IPO as well as FPO. There are two more conditions, that if you have declared as what, willful defaulter or fraudulent borrower by RPI, automatically you are prohibited from accessing the capital market under IPO route as well as under FPO route. Okay, and the last person in the list is the person who is fugitive offender. Means what? The person who has conducted a certain kind of activity in India and now he is declared as fugitive. कल हमने अनुष्का देखा था, पार्टी यहाँ पे इंडिया में है या फॉरेन चला गया. फ्यूजिटिव ऑफेंडर मीन्स वो यहाँ से भाग के चला गया है. So naturally that person is also not able to raise the funds through the capital market. So these are the basic prime conditions. In addition to that, certain net worth and other kind of eligibility norms are there. We discussed it yesterday and they are important from your exam point of view also. Let us have a look on the module. क्या ये मॉड्यूल दिख रहा है? Chirag, Anushka, are you able to check out the module? Yes, sir. Anna, whether the module is visible, we are discussing the key conditions in the module regarding the eligibility norms. Are you able to check out the module on screen? Yes, sir. Sanjay bhai, are you able to check out? Very good. तो नजर मारते हैं what we are talking about. We were discussing about the eligibility criteria, and these are the eligibility criteria on page number 222 in your module. All these things are important, where additional information is there that suppose SEBI has debarred you for a particular period, say for 3 years, automatically you are debarred from raising the funds through IPO for 3 years. It indirectly means later on, after completion of period of 3 years, you are able to access. But in case of fugitive offender, willful defaulter and fraudulent borrower, no such provision exists. So once you are a willful defaulter, automatically assumption is you are not able to access the market. In addition to that, there are twofold conditions. Yesterday we discussed these, that there are conditions regarding net tangible assets, profitability, and a track record. Means a good company can have option 1 where it can raise capital, and if your company is not good as per the records of the company, indirectly it means you don't have enough net tangible assets, or you do not have the average operating profit of around 15 crore, or if you don't have net worth, then still you can access the capital by way of the other condition, that is if you are not able to raise funds under option 2. Anushka, jaldi bol, what is the way out? If you are not allowed to raise funds under traditional mode, what is the alternate way? Still you can have your issue or not. Yesterday we discussed about Anushka Limited, a new company wishes to have an IPO. Whether a new company can have IPO, the normal answer is no, because company has to prove the track record for 3 years. As the company is new, it might not having the relevant data, the net worth and capital
for last 3 years, but still it can have an issue or not. अनुष्का जल्दी बोल, क्या तू ऐसे में सिनेरियो में क्या तू शेयर इशू कर सकती है, आईपीओ निकाल सकती है? If you are a Yes, new sir. company, yes, but what is the way out? For that By purpose, book bol. building and Very good. book Book building building. is mandatory, so you can sell, but the way should not be the fixed price issue. It should be book building. And secondly, bol. At least 75% QIBs को देना चाहिए. Very good. And whatever issue you are going to have, at least 75% should be allotted to QIBs. It indirectly means what? 25% will be in the hands of general public maximum, 75% will be in the hands of QIB. And suppose the QIBs are not applying, but general public is applying for the share. Can that be exceptional situation that bankers, financial institutions are not applying for your shares, but other people are applying? Is that allowed? No. No. Very good. So what is the condition? That you can't have interstate transfer. Interstate transfer means from one quota to another quota. Means 75% should be raised through whom? The issue to QIBs. QIB. तो उन लोगों ने उतना नहीं लिया तो? Uh, तो वो इशू कैंसिल हो जाएगा. हाँ बोल, क्या बोला? हेलो हेलो. हम्म. हेलो, तो वो वी वर इशू टॉकिंग कैंसिल हो अबाउट. हाँ, जाएगा. तो वो इशू कैंसिल ही हो जाएगा. सपोज क्यू आई बीज, सपोज द इशू साइज इज, yesterday we discussed, the issue size is 100 crore, and out of that 100 crore, 75 crore should be subscribed by whom? QIB. And 25 crore should be subscribed by the normal investor. But suppose ulta हो रहा है, 75 crore is the application size from the normal investor, and 25 crore is from QIB. तो क्या ये चलेगा? ऐसा इशू निकाल पाएंगे? द आंसर इज नो. नहीं. बिकॉज once it is restricted for QIB's part, they should be there only for the sake of what? Applying for the share. So this is the condition for, कल हमने देखा था main board listing. Mr. Sanjay, there are different kinds of listing on stock exchange. What do you mean by main board listing? The big companies, the companies which are experienced companies, normally list themselves in the main board. Correct. But other than main board, there are two more options for listing available. First one is the listing for small and medium type of companies, and third one is listing on the innovators growth platform. So if you are a company eligible to list under different categories, multiple options are there. Suppose Vikrant Limited is a small company or a medium sized company. It has option. It might be listed on main board, might be listed on the SNM. Same logic is for the startups and other kinds of innovator kinds of business. You can list on IJP, and if time allow, and if you are going to fulfill the condition, you can list on the IJP also. Okay. So what are the requirements for such kind of issue? Let us have a look on that. That when we are talking about what? The small and medium kind of businesses, the eligibility conditions are as follows. Check out. For SME board, the post issue capital should be of less than equal to 10 crore. So if your capital is small, around 10 crore only, you should firstly go for SME. If your capital after the fresh issue, means the original issue, original held capital by the promoter plus IPO, that equals to post issue capital, is around 10 to 25 crore, then you can list either on SME or main board. The main advantage or the benefit for this scheme is SEBI does not issue observation letter or the comments on SEBI is going
the contents of draft letter, SEBI may suggest changes in the draft letter. So automatically it will take times that whatever you are going to submit as a offer document, it might not be wholly accepted by SEBI. SEBI उसमें changes करने के लिए भी बोल सकता है. But in typical cases of SNM, small and medium kind of listing, small and medium kind of business, there is no need to go for SEBI's approval for your offer letter. That particular work is entrusted to the lead managers. Correct. So what is the story? That the large size company may get the funding after a few time because there might be objection and changes required by SEBI, but such type of delay and changes are not there in case of SNM issues because the lead manager shall submit a due diligence certificate to SEBI. तो टेक्निकली किसको देखना था कि ये सब सही है कि नहीं, सेबी को देखना था. मगर इन वालों के केस में ये कौन देखेगा? For small and medium type of company, the lead merchant banker is going to certify. So automatically there will be time savings. One more condition is there that IPO shall be 100% underwritten and at least 15% of part should be there as what compulsory. Sorry, the lead manager shall underwrite at least 15% of the part, and there will be compulsory market making for a minimum period of 3 years. So are you aware of what is market making? अनुष्का, क्या मार्केट मेकिंग तुझे मालूम है? No, sir. Very good. Mr. Sanjay, are you aware what is market making? Very good. So let us check on the screen. This is the story of what market making. Check out. Suppose on a particular stock exchange on BSC, shares of A Limited are listed. Okay. So what is the sequence? Normally, if a particular person is buyer for or interested in securities of A Limited, he is going to contact the Bombay Stock Exchange through its broker. Correct. The broker will place the order and that creates for the demand for the product. कैसा ये? On the opposite side, there might be another person exists who is what? The another person is the seller for the securities of A Limited. So again, such person seller is going to approach the stock exchange for his order. So broker will be there on both sides and they are going to transact. So when seller creates the order, he is creating the supply, and when the buyer is creating order, that is the demand. And the price of the security is normally based on what? The demand and supply of the shares. क्या ये हमें मालूम है? Or is this common sense that there will be demand for the shares, there will be supply for the share, and the price will be decided by the demand and supply? Is that so? अनुष्का, समझ आ रहा है तुझे क्या हो रहा है वो? Yes, sir.
For example, buyer is saying that I am ready to buy shares of A Limited for 50 rupees and seller is ready to sell the shares for 70 rupees. Can that be there be a deal in between buyer and seller? बायर 50 में खरीदना चाहता है, सेलर 70 में बेचना चाहता है, तो क्या इन दोनों में डील होगी? नो, बिकॉज द प्राइसेस आर डिफरेंट. So hypothetically, when there is no deal in between these two, the buyer will think that whatever I'm quoting is at a lower price. That's why opposite party is not ready to sell me. I'm quoting 50 rupees as a rate for buying the share, but opposite party are ready to pay how much? 70. So he is going to increase the price of security from 50 to 55. Okay, go another way. Suppose seller is interested in selling his share and he is charging 70 rupees, but on the opposite sides, buyers are ready to pay 50 only. It means buyers are assuming that in future the price of the share might be maximum 55 to 60, so they are not ready to buy the shares at 70. Is that also possible? अरे क्या हर इन्वेस्टर का एक अलग अलग अंदाजा होता है शेयर के भाव के बारे में? बायर अलग सोच सकता है, सेलर अलग सोच सकता है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अनुष्का समझ आ रहा है कि दोनों लोग अलग अलग सोच रहे हैं? Yes. तो अभी सेलर को तो पैसे चाहिए, 70 में कोई सेल करने के लिए क्या नहीं है, मतलब खरीदने के लिए रेडी नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपना भाव कम करेगा और कितना लाएगा? 65 लाएगा. सो बायर इज इंक्रीजिंग द प्राइस, सेलर इज डिक्रीजिंग द प्राइस. और क्या ये ऐसे ऊपर नीचे हो के कोई तो एक प्राइस आएगी 59 रुपीज, जब बायर भी 59 को बेचने के लिए खरीदने के लिए तैयार है, सेलर भी 59 में बेचने के लिए तैयार है, तो क्या इन दोनों के बीच में डील हो सकती है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो द प्राइस 59 इज डिसाइडेड बाय whom? द बायर और सेलर और बाय बोथ? अरे स्टॉक एक्सचेंज में कीमतें बाय बोथ. By आर यू both. गेटिंग द अबाउट? दोनों लोग अपने तरफ से, बोथ टू पीपल आर गोइंग टू क्रिएट अ प्राइस. But now check out here what we are assuming, that A Limited is a good company, existing company. It is having a track record. We got the details regarding last 5 years P&L, balance sheet, dividend of the company. ये हमको सब मालूम है. Then only we will be able to predict the price of the company. Is that so? अरे if we are not able to predict the price, क्या ये ऐसा आगे पीछे होने का चांस है? Are you getting the point? Go in other Yes. way. Suppose the company is new, Anushka Limited, and this company is a new company. No one knows what is the product of Anushka, how much profit Anushka is going to earn, and so. तो क्या इसमें प्रिडिक्शन हो सकता है? अरे आराम से आंसर Yes. दो. इसमें प्रिडिक्शन होने का चांस है या गलत प्रिडिक्शन होने का चांस है? संजय, what you are going to have in case of new company? Suppose on one hand we got Tata Motors as a company. Can you predict the prices of Tata Motors based on past results of Tata Motors for last 10 years? क्या टाटा मोटर्स एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है? अरे टाटा मोटर क्या? हाँ, we can predict for Tata Motors. Why? Because it is the old and reputed company. Correct. But the problem arise for whom? Anushka Limited. Why? Because it is a new company and it is difficult to predict. तो अभी आराम से आंसर दो. Now, when we are having such two different kinds of companies where the proper prediction is possible, proper prediction will be always there for existing company, and it is not possible for whom? The new company. And now check out what we assume in this diagram, that whenever there is a person who is going to buy, there are chances that there will be another person who is going to sell. But now tell me, buyers and sellers are simultaneously available or will be available for which type of company? Old companies or new companies? Old companies. वेरी गुड. उनको प्रॉब्लम समझ आ रहा है कि जो पुरानी कंपनी है उसका परफॉर्मेंस मालूम है, टाटा मोटर लोगों को मालूम है, तो उसके लिए बायर भी होने का चांस है, उसके लिए सेलर भी होने का चांस है. द प्रॉब्लम किसको आएगा? द प्रॉब्लम विल बी फॉर व्हाट? अनुष्का लिमिटेड. That though Vikrant, suppose one of the investor is the holder of shares in Vikrant, when he is going to quote his bid in the stock exchange, no one will be there on the opposite side. क्या ऐसा होने का चांस है?
अरे हम शेयर बेचना चाहते हैं मगर कोई खरीदना ही नहीं चाहता, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे व्हाई दिस इज हैपनिंग? आंसर दो। I am ready to sell the shares of what? Anushka Limited. I'm in need of money. Under IPO, I acquired the share. Now I'm in need of money, so I'm going to sell the share. अभी आराम से आंसर दो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि the investors are not aware about what? The performance of Anushka. They do not have enough faith in Anushka, so they are not buying the share. Is that possible? Yes. तो गड़बड़ क्या हो गई? ये इधर स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज पे हमने क्या कर दिए? शेयर लिस्ट कर दिए। और कौन खड़ा है सिर्फ? ओनली सेलर इज अवेलेबल हु इज रेडी टू सेल, बट देर इज नो बायर ऑन द अदर साइड। अभी कॉमन सेंस से आंसर दो। इज दैट अ गुड साइन फॉर अ सेलर हु वाज ओरिजिनली द इन्वेस्टर इन ए लिमिटेड? आर यू गेटिंग No. द पॉइंट? उसका पैसा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया कि मैंने 5 लाख रुपए के हाँ. शेयर ले तो लिए इसके अनुष्का के, मगर अभी मैं बेचना चाहता हूं तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और गो इन Yes. अदर वे। अभी टिपिकल केस देखो। इन टिपिकल केस इट माइट बी पॉसिबल दैट अनुष्का इज परफॉर्मिंग वेल एंड सम पार्टी इज इंटरेस्टेड नाउ इन बाइंग द शेयर्स ऑफ व्हाट? अनुष्का लिमिटेड। कोई तो बायर है जिसको ये शेयर चाहिए, बराबर, मगर सामने सेलर ही नहीं है। क्या ऐसा भी होने का चांस है? नो वन इज रेडी टू सेल द शेयर बिकॉज नो वन इज एबल टू प्रेडिक्ट एट व्हाट प्राइस शेयर शुड बी सोल्ड। क्या ये भी गड़बड़ी हो सकती है? सो द एरर एंड द प्रॉब्लम कैन बी ऑन बोथ वे और नॉट। संजय, आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. व्हाट इज गोइंग ऑन? ये किसके लिए होता है? फॉर whom दिस में हैपन? फॉर रिलायंस, फॉर टाटा, फॉर बाटा और फॉर अनुष्का? ये किसके लिए होता है? अरे द प्रॉब्लम arises for whom? The existing established company or new companies? New company. तुमको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? वो ये न्यू कंपनी कौन है? हाँ. नाउ चेक आउट। एज पर आवर कैलकुलेशन दिस इज स्मॉल एंड मीडियम टाइप ऑफ कंपनी। ये एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस पर ये कंपनी एस Bombay. एन एम में है, ये छोटा खिलाड़ी है। इसका क्या भाव पड़ेगा किसको समझ नहीं आ रहा है। बायर बोल रहा है दैट आई एम रेडी टू पे 80 रुपीज फॉर अ शेयर, बट सेलर इज नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड व्हाट कैन बी द फ्यूचर प्राइस ऑफ अनुष्का इन नेक्स्ट ईयर। उसको लगता है कल जाके भाव 100 रुपए हो गया और मैं 80 में अभी अगर बेचूं तो मेरा नुकसान होने का चांस है। Are you getting the point? But he is not able to calculate price. So what will happen in such a scenario? That there are buyers, but there are no sellers. और उल्टे एंगल से there might be sellers, but there are no buyers. अभी आराम से आंसर दो। Whether investor should invest in such security? क्या आईपीओ में ऐसे शेयर के लिए अर्जी करनी चाहिए जहां पे हमको ही नहीं मालूम कि आगे शेयर बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? और इज इट एडवाइजेबल फॉर द बायर एंड सेलर? No. For investor? Sanju, are you getting the point? That if you are not able to sell the share, are you going to buy such share? You have surplus 5 lakh rupees. You can invest in Anushka as well as you can invest in Airtel. तो तू कौन से कंपनी में डालेगा पैसा? Where you are going to invest? Airtel. Are you getting the point? Because you are not sure that whether anyone will be there in market for buying my securities or not. So in such scenario, whenever there is an IPO by Anushka Limited, Anushka Limited क्या निकाल रही है? IPO. But in this case, no one is going to subscribe the shares of Anushka. Are you getting the point? Why? People are not sure regarding how much they can earn by way of what? Selling such security in the market in future because no one is ready there. Correct? अनुष्का, समझ आ रहा है कि तेरे शेयर को कोई भी डिमांड नहीं Yes. करेगा, आईपीओ तेरा फेल जाएगा। क्या सही है? हाँ. Very good. So in such case, the regulation suggests, now check out, when Anushka Limited, a small and medium company, wishes to enlist itself on what? Stock exchange, small and medium entities board. अभी ठंडे दिमाग से देखो। अनुष्का लिमिटेड should appoint, typical case है, appoint a merchant banker who is to be taken as what? Market maker. Now check out, what do you mean by market maker? Market maker is a person who is ready to buy
as well as sell the securities of agreed parties at a particular rate for a particular period. इसका मतलब क्या? ये जबरदस्ती हमने एक आदमी को खड़ा किया है जिसका नाम क्या है? मार्केट मेकर. So what was the earlier diagram? That there is a seller in market. Check out this diagram. What was the problem? There is a seller, Mr. Vikrant. Correct. Vikrant के पास क्या है? Shares worth rupees 5 lakh. He wished to sell, but what is his problem? No one is there on the opposite side. Are you getting the point? अरे यहाँ पे ये विक्रांत खड़ा है. विक्रांत के पास कितने रुपए के शेयर है? 5 लाख रुपए के शेयर है. विक्रांत ये शेयर क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है, मगर सामने कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं है. बट इन दिस केस, एज पर द प्री कंडीशन, A Limited has appointed one bank, ICICI Wealth Management, as what? Market maker. Means the person who wishes to sell the security can be in a position that he is going to sell the securities to the market maker. मार्केट मेकर कौन बन गया अभी? Buyer. So indirectly the system is giving me a guarantee that buy shares of Anushka Limited, though it is a small and medium company, and if the investor wishes to sell the share, there will be certain person known as market maker available in the market who is going to buy the security. तो क्या ये एक मुझे एश्योरेंस मिल गया मार्केट मेकिंग से? अनुष्का Yes. समझ आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? समझ आ रहा है सर. समझ आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया कि कम आदमी अगर बेचना चाहता है तो सामने वाला खरीदने वाला ही कोई नहीं, तो उसका नुकसान होने का चांस है. तो अभी लॉजिक ये है कि ये मार्केट मेकर वहां पे खड़ा रहेगा. मतलब जिसको भी पैसे की जरूरत है वो मार्केट में बेचना चाहता है, और किसी ने अगर शेयर नहीं लिए तो कौन लेगा? ये मार्केट मेकर लेगा. फिर से एक बार देखो, मार्केट मेकर कौन है? ये मर्चेंट बैंकर जैसा ही आदमी है जिसको स्पेसिफिकली यही काम करने के लिए अपॉइंट किया है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? करेक्ट. Or go in other way, what was our another example? That there might be person available, Mr. Sanju, in the market, who is going to buy the securities of Anushka, but no one is ready to sell the security. क्या ऐसा भी होने का चांस है? अरे छोटी कंपनियों को कोई जानता ही नहीं है, तो उसको डिमांड है मगर सामने से सप्लाई नहीं है. क्या ऐसा भी होने का चांस है संजय? देर माइट बी डिमांड, देर माइट, there are chances. So what will happen in such case? That if Sanju is the buyer, automatically there will be market maker available who will be now what? The seller of the security. Are you getting the point? So the buyer and seller should not, the investor should not take tension regarding whether I will be able to buy the security or sell the security of such company, because there will be always a person available in market. अभी ठंडे दिमाग से सोचो, क्या जबरदस्ती ऐसे एक आदमी को खरीदने के लिए बेचने के लिए अपॉइंट करना ये गलत है? अरे द डिमांड एंड सप्लाई शुड बी फ्रॉम द इन्वेस्टर और नॉट. Yes. हाँ, तुमको समझ आ रहा है कि नॉर्मल लोग अगर आपस में डील कर रहे हैं तो सब सही भाव होने का चांस है, मगर ये मर्चेंट बैंकर ये जानबूझ के बीच में मार्केट मेकर रखा, तो क्या ये जानबूझ के कम या ज्यादा प्राइस भी दे सकता है? Are you getting the Yes. point? So hypothetically, the market maker should not be there always in the market. That's why the regulation suggests that the market maker will operate in market for a maximum period of what? 3 years. So 3 years are given to whom? Anushka Limited. That in these 3 years, Anushka should perform well. Anushka should have P&L and L and balance sheet on the basis of which people can predict the price. और एक बार लोगों को पता चल गया कि अनुष्का ये अच्छी कंपनी है, यहाँ पे पैसा डाला तो फायदा होगा, 3 साल का डेटा आएगा, 3 साल कंपनी डिविडेंड देगी, तो क्या अभी मार्केट मेकर को बेचने जरूरी है, या मार्केट में दूसरे प्लेयर भी अवेलेबल होंगे बाय करने के लिए एंड सेल करने के लिए? अरे एक बार कंपनी एस्टेब्लिश्ड हो गई तो क्या तुम बाहर भी बेच सकते हो मार्केट में? Sanjay, are you getting the point that when the company is a good company after 3 years, people are believing in the performance of the company, whether they are going to buy from these particular parties or they are going to buy directly from market?
Directly from market. वेरी गुड। तो अनुष्का क्या हो जाएगा, मार्केट में फिर बायर एंड सेलर अवेलेबल होंगे अगर कंपनी अच्छी बनती है तो। मगर अच्छी बनने तक क्या क्या बोला गया है कि नई कंपनी जब तक अच्छी नहीं बनती तब तक 3 साल ये बायर एंड सेलर के का रोल कौन करेगा, specified intermediaries known as what, market maker. Are you getting the point? Now tell me, for Reliance Limited, for Bajaj Limited, क्या उनके लिए मार्केट मेकिंग जरूरी है, या वो लोग ऑलरेडी उनको जानते हैं, खरीदने बेचने गए तो लोग अवेलेबल होंगे? Very Already good. There is no need of market making for established company. So how much time period is given? 3 years. 3 years. Very good. So the condition is compulsory market making for a minimum period of 3 years from the date of listing. So if you are going to list on S&M platform, you should appoint one under merchant banker as what, market maker, and his role will be to be a buyer or seller depending on the condition. Have you got the point? Yes. Very good. And one more condition is there, that the application size will be 1 lakh rupees. Yesterday we discussed that in traditional IPO it is 15,000. For SNME it is 1 lakh rupees. Okay. And last condition is may migrate to main board if special resolution is passed through postal ballot when the minority holders are ready to convert themselves from SMA to main board listing. This is the normal condition. Then we discuss about what, listing of innovators growth. Anushka jaldi se bol, who are to be taken as what, the eligible entities on innovators growth, nazar mar aur bol. अरे who can, हाँ, Aim to list startups which are intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analytics, biotechnology, or nanotechnology to provide products, services, or business platform. ये कौन लोग हैं, स्टार्टअप, करेक्ट, हु आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, करेक्ट, हु आर इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन द बिजनेस ऑफ आईपीआर, पेटेंट वगैरह, data analytical, biotech, nano vano, for all these type of new startup kind of risky business ventures, they have to invest, assumption is on what, the IGP, that is innovators growth platform. Are you getting the point? So if you are running a finance company, are you able to invest, sorry, list on IGP? अरे तुम्हारी अगर फाइनेंस कंपनी है तो क्या तुम वहां पे करोगे? No. नो, वेरी गुड। तो तुम कहाँ पे करोगे? SME और हाँ, वेरी गुड, तुम एसएमई करोगे या मेन बोर्ड पे जाओगे, क्या सही है? हाँ, बराबर। मगर तुम अगर कौन हो, पेटेंट वाली कंपनी हो, तुम विक्रांत इंफोटेक हो, तो कहाँ पे जाओगे? innovators growth इनोवेटर्स platform. गोल्ड प्लेटफॉर्म। Now, what are the additional conditions for listing on Innovators Growth Platform? Be quick, read the condition. First one is, At least 25% of pre-issue capital is held by QIBs, innovators, growth platform investors, any other class of investors as specified by SEBI for at least a 1 year. very good. So, first condition is what? That suppose you wish to list yourself on IGP, your company should be there in existence for 1 year, and at least 25% of pre-issue, means original capital, should be in the hands of QIBs or the specific investors, like the venture capital funds or angel investors. Are you getting the point? तो ये सब क्या होना चाहिए? At least you should get approval from these people. Who are these people? The experts, QIB, एंजल इन्वेस्टर, क्या ये सब एक्सपर्ट लोग हैं ये स्टार्टअप के धंधे में? यस। तो इन लोगों के पास एटलीस्ट 1 year देर शुड बी 25% of the capital. Second one, listing is allowed with or without IPO. This is the tricky part. This is not allowed normally. What is the assumption? That you are going to have IPO and then you are going to list your security. But for
Innovators growth assumption is you are not in a position to have your IPO, but you are listing your securities as a precondition and then you will go for IPO. अनुष्का समझ आ रहा है? पहले कंपनी आईपीओ निकालती है, लोगों को शेयर देती है और उसके बाद वो लिस्ट करती है। तो अजम्पशन है आईपीओ पहला आएगा और बाद में वो शेयर्स लिस्ट होंगे। मगर ये इनोवेटर वालों को ऑप्शन दिया है कि भले उन्होंने आईपीओ नहीं निकाला हो, स्टिल दे कैन लिस्ट, और जब उनको फेवरेबल लगेगा बाद में तब वो क्या करेंगे, व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल वो आईपीओ निकालेंगे। क्या ऐसा भी होने का चांस है? So here we are Yes. listing only, but there is no trading of security of such type of company. Third condition is the minimum offer size shall be how much? 10 crore rupees for IPO. ऐसा बाकी किसी के लिए नहीं है, सिर्फ ये इनोवेटर वालों के लिए है कि जब तुम शेयर, संजय कुमार, आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू इशू शेयर्स, द कैपिटल टू बी रेज शुड बी मिनिमम 10 crore. Such kind of provision is not there for other kinds of issuer. Anna, are you getting the point? चिराग समझ आ रहा है कि ये सिर्फ इन लोगों को है कि एटलीस्ट 10 करोड़ रुपए का तो क्या निकलना चाहिए, आईपीओ को निकलना चाहिए, वेयर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज इज हाउ मच? 2 लाख रुपीज एंड द मल्टीपल्स। तो छोटे इन्वेस्टर क्या ये इनोवेटर ग्रोथ में पैसा डाल सकते हैं? अनुष्का, क्या छोटे? Yes. अरे आंसर है नो। छोटा इन्वेस्टर मतलब 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा डालने वाला क्या इधर डालेगा? क्योंकि इधर 2 लाख और 2 लाख के मल्टीपल में No. करना है। तो छोटा इन्वेस्टर की कहाँ पे डाले? SME. एसएमई नहीं, छोटा इन्वेस्टर उधर भी 1 लाख रुपए। अरे 15,000 होता है कहाँ पे? मेन बोर्ड पे जो Main कंपनीज board. होती है वहां पे मिनिमम 15,000 ही रिक्वायरमेंट है, बराबर? तुम अगर यहाँ हाँ, पे जाती हो तो 1 लाख है, कहाँ पे? एसएनएम पे जाते हो तो, बराबर? तो आम आदमी जिसके पास 15,000 हो वो कहाँ पे डाल सकता है? main board. मेन बोर्ड पे, समझ आया? और ये 2 लाख जो बड़े इन्वेस्टर है वो कहाँ पे जाए? इनोवेटर्स ग्रोथ। अभी ठंडे दिमाग से देखो, Innovators. कौन सी कंपनी डूबने का चांस है? अरे द चांसेस ऑफ व्हाट? नॉन परफॉर्मिंग कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी, कौन सी होने का चांस है? इनोवेटर वाली होने का चांस है या अपनी नॉर्मल कंपनी होने का चांस है? रिस्क कहाँ पे ज्यादा है? Innovators. समझ आया? तो इधर इसलिए क्या बोला गया है, ज्यादा पैसे वाले लोग ही यहाँ पे आए, छोटे खिलाड़ी लोग ना आए, क्योंकि अगर छोटे लोग यहाँ पे पैसा डालेंगे इनोवेटर ग्रोथ में तो उनका डूब जाएगा पैसा। क्या सही है? Yes. समझ आए? तो छोटे लोगों को क्या बोलना है, तुम अच्छी कंपनियों में 15,000 के साथ जाओ, और दोज हु आर रेडी टू बेयर रिस्क, संजय, दे शुड इन्वेस्ट इन दिस इनोवेटर ग्रोथ। Correct? Then the number of allottees shall be at least 50. This is also one more condition which is not there in any other kind of what? Listing. That whenever you are going to sell share, you should be able to sell the securities to at least 50%. Means what? Technically you should be a good company, करेक्ट? और तुमको क्या करना है इसमें? 50 लोगों को तो एटलीस्ट शेयर बेचने। And the last one, the minimum trading lot shall be 2 lakh rupees and multiple. So just like earlier minimum application size, the trading lot is also 2 lakh. तो तुम्हें अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो भी तुमको 2 लाख रुपए करने हैं और उसके मल्टीपल में, एंड इफ यू विश टू सेल द सिक्योरिटीज ऑन एक्सचेंज, स्टिल द लॉट साइज विल बी 2 लाख। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अजम्पशन क्या है यहाँ पे अनुष्का, कि छोटे ट्रांजैक्शन ना करो। कौन से ट्रांजैक्शन करो? बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करो। करेक्ट है? Yes. अभी आराम से आंसर दे अनुष्का। सपोज यू आर परचेसिंग शेयर्स ऑफ एयरटेल या टाटा मोटर, क्या ऐसा कोई लिमिट है कि तेरे पास अगर शेयर है तो तू एक टाइम पे 10 ही बेच सकती है, उससे कम नहीं? ऐसा कोई लिमिट है? और यू कैन सेल वन शेयर ऑल्सो? नहीं, लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, वेरी गुड। ऑन द एप्लीकेशंस लाइक जीरोदा एंड अदर काइंड ऑफ ट्रेडर्स, संजय, वी आर एबल टू सेल at least one share as a minimum quantum. Is that so? Very good. But for the case of innovator, the lot size will be how much? 2 lakh rupees. So transaction in 2 lakh and multiple of 2 lakh are only allowed. Have you got the point? So these Yes. are the eligibility requirement. Why we're discussing it? Because as per my opinion, you can have a direct question on this. Okay. Other than that, let us have a look on fast track issue, because as per my opinion, you can have a question in your paper on this also. Now, what name suggests fast track issue? Sanjay, what do you mean by that? अरे फास्ट ट्रैक का क्या मतलब है? हाँ,
अरे कुछ तो बोल. What do you mean by fast track? Fast moving means what? The procedural requirement for normal IPO are reduced, and you can have what? Chance to raise the funds in a shorter manner than normal. कैसा ही है? So that is called as, अनुष्का समझ आ रहा है फास्ट ट्रैक का क्या मतलब है? That the company is going to appoint merchant banker will understand the functioning of company, merchant banker will prepare the draft offer, merchant banker will submit the draft offer to SEBI will have the objections and queries in the draft offer, company and merchant bankers are again going to discuss regarding how to answer the queries, they are going to provide additional information and documents to SEBI. Then SEBI is going to approve or wait your offer documents, the draft. Then you are going to prepare the offer document. Then you are going to submit it to ROC. Then you are going to submit it to stock exchange. Then you are going to have the permission to collect funds through IPO. क्या ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है? अरे क्या ये लंबा चौड़ा Yes. प्रोसीजर है? Whether is it possible for a company to raise immediately through IPO, Sanjay? That suppose Sanjay Kumar is running a company. There is an order from European buyer that supply us 80,000 units of four wheelers. ये कोई तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो क्या इसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा? अरे if you got huge order for export, you are in need of money or not? तो यू आर Yes. इंटरेस्टेड इन रेजिंग फंड्स थ्रू आईपीओ. तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? तुमने अगर आईपीओ की लिस्ट की लाइन पकड़ी तो ये सब कागज कंप्लीट करो फॉर द पेपर वर्क एंड अपॉइंटमेंट एंड अदर काइंड ऑफ कंप्लायंस, तुम्हारे 1 1.5 2 साल जाएंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो 2 years आर नेसेसरी टू रेज द फंड्स थ्रू आईपीओ मिनिमम. तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? टिल दैट पीरियड वेदर यूर कस्टमर फ्रॉम यूरोप इज गोइंग टू वेट. अरे यूरोप वाला आदमी बोल रहा है माल भेजो. अनुष्का हम क्या बोल रहे हैं? रुको जरा पैसा रेस करने दो फिर भेजते हैं. तो क्या ऑर्डर चला जाएगा? Very good. Are you getting the point? So whether it is a loss making scenario for the company as they are not able to raise the funds in quick manner, correct? So for typical kind of company, there exists the provision for what? Fast track issue. Now hypothetically there is nothing fast in the fast track. आराम से देखो. स्टोरी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दो द नेम इज फास्ट, टेक्निकली इट इज नॉट टू फास्ट. हमको लगता है कि फास्ट का क्या मतलब हुआ अनुष्का? हमने आज सोचा हमको पैसा चाहिए और 2 महीने में पैसे मिल गए. क्या ये फास्ट है? Yes. अरे हमें पैसा चाहिए और 2 साल के बाद मिल गए. क्या ये फास्ट है? Yes. अरे 2 साल के बाद पैसा मिलना ये फास्ट होता है क्या? यू आर इन नीड ऑफ मनी और तेरे को 2 साल के बाद पैसा दिया, ये फास्ट है या स्लो है? Slow and वेरी गुड. और 2 महीने में ही मिल गए तो? fast and हाँ, मगर ये इतना फास्ट नहीं है. चेक आउट. व्हाट इज द प्रोविजन? संजय रीड द फर्स्ट लाइन. द सिंपल आंसर लाइज इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ. बोल. Very good. So here now first check out. Here we are not talking about IPO. पहला गेम चालू हो गया. The whole game of fast track issue is for what? FPO. Means what is FPO? That you have already had an IPO, you have already issued shares to general public, and now you are going to raise funds in addition to what you have raised in IPO. तुमको समझ आ रहा है? तो ये IPO वालों को फायदा होने का चांस है या FPO वालों को होने का चांस है? FPO means what? Whether your conditions are whether your data is available in stock market, as you are having an IPO, you are governed under the listing agreement. From time to time you are submitting documents to the stock exchange. So whether people are aware regarding what is the financial position of the company. अरे जिसका आईपीओ लग गया तो अजम्पशन क्या हो गया अनुष्का? ये एक अच्छी कंपनी है. कैसा ही है? आईपीओ मतलब इन्होंने सब क्या कर दिया है? काम पूरा कर दिया है.
दे हैव कंप्लाइड विथ ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग, सब डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट उन्होंने जमा कर दिए, क्या ऐसा भी होने का चांस है? अरे when you are a listed Yes. company, is that a chance that you are fulfilling all the requirements? तुम लिस्टेड ही हो तो Yes. सब तुम कर रहे हो, तो ये लोगों को चांस है क्या निकालने का? एफपीओ. एंड व्हाट इज फास्ट ट्रैक? रीड द लाइन. द कंपनी नीड नॉट file the draft offer document and obtain the observation. क्या इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम जाने का चांस था? अरे हम ऑफर डॉक्यूमेंट Yes. पूरा प्रिपेयर करेंगे, सेबी को भेजेंगे, सेबी उसमें करेक्शन निकालेगा, फिर हम वो ठीक करके भेजेंगे, फिर वो और करेक्शन निकालेगा, फिर वो और करेंगे, क्या ऐसा होने का चांस है? अरे इन नॉर्मल Yes. केसेस this takes too much time or not, Sanjay? Yes, but for fast track issue there is no need that company should have what draft offer document, and there is no need to get it weighted from the SEBI, because you are a reputed and a good company having good track record. Are you getting the point? The whole story is there in the list. तो क्या हर कंपनी को ये अलाउ है? और द कंपनी सेटिस्फाइंग ABCDEFGHIL, क्या इनको अलाउ है? अरे whether every company can have direct issue without draft letter of offer, or only good companies are allowed? अरे good companies are you getting the point? The reputed companies are only allowed. अनुष्का समझ आ रहा है? तो ये अच्छी कंपनी कौन है? पढ़ना चालू कर. पहला, लिस्टिंग. अनुष्का, हु आर अलाउड टू हैव फास्ट ट्रैक एफपीओ? बोल पहला. अनुष्का नहीं है. संजू तू पढ़. Read the first line. What are the preconditions if you are interested in FPO? First, equity shares of the issuers should be listed on stock exchange for a period of at least 3 years immediately preceding. So indirectly, FPO is not allowed for new company. You should be a listed company and there is a period gap of 3 years. Are you getting the point? So for last 3 years, you are submitting all the necessary documents to SEBI and other people. That's why you are allowed. समझ आ रहा है पहला? Second, what is second condition? Hmm. Means what? Very good. We will later on discuss what is reference date. Simple point is, if there are promoters, there are possibilities that the promoters are having physical shares. Is that possible? कि पुराने जमाने में कंपनी फॉर्म हुई थी, कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1980, देयर वाज नो डीमैट सिस्टम देयर, सो द प्रमोटर्स गॉट फिजिकल शेयर्स. क्या ऐसा होने का चांस है? और व्हेन द कंपनी हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन, तो फिजिकल शेयर ही है सिर्फ, क्या ऐसा भी होने का चांस है? अनुष्का, आर यू देयर? माइक बंद पड़ गया तेरा कल जैसा. Yes, sir. तो जब कंपनी चालू हुई थी 1980 में, आज से 50 साल पहले, तो क्या होगा पोजीशन? तब डीमैट वीमैट था या फिजिकल था? Physical था. हाँ, तो अभी क्या बोला गया है? दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एफपीओ, तुम्हारे सब शेयर क्या होने चाहिए? डीमैट होने DMAT चाहिए. में व्हाई इट इज सो? electronic. बिकॉज once the shares are in electronic form, it is very much easy to track the movement of share. Are you getting the point? ट्रैक द मूवमेंट Yes. मीन्स व्हाट? कौन किसको शेयर बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कितने भाव में खरीद रहा है, क्या ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा अवेलेबल होता है? Yes. वेरी गुड. बट इफ दे आर इन फिजिकल फॉर्म, इज इट इजी टू ट्रैक? No. नो. वेरी गुड. तो कंडीशन डाला है, फर्स्ट that there should be listing for 3 years, and second the promoter share should be in demat form. मतलब प्रमोटर लोग उसमें कोई गड़बड़ी ना करें, उनका पूरा रिकॉर्ड मिलना चाहिए. थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. संजू, रीड थर्ड. हम्म. हम्म. Means what? That if you are having already listed company, a certain amount of your capital will be in the hands of general public. Is that so? अरे कंपनी अपने सभी शेयर मार्केट में लगाती है बेचने के लिए, या थोड़े प्रमोटर के पास भी होते हैं?
Whenever थोड़े company प्रमोटर्स got के पास भी listed, होते हैं. whether every shares are there, every share of the company is available for trading? No. So the threshold is at least 1,000 crore worth rupees share should be there in the hands of public. तो ये छोटी कंपनी की बात हो रही है, बड़ी कंपनी की बात हो रही है? बड़ी कंपनी. बड़ी कंपनी, because we are talking about capitalization of 1,000 crore. Then trading turnover, this is the new condition. पढ़ो, ट्रेडिंग टर्नओवर क्या बोलता है? अरे बोलो जरा जल्दी से, अनुष्का, रीड द लाइन. Annualized trading turnover of the equity shares of the issuer uh, during the 6 calendar months immediately preceding the month of the reference date has been at least 2% of the weighted average number of equity shares listed during such 6 months period. ना, बस बस However, बस बस, हावेवर मत पढ़. इसका क्या मतलब हुआ? दैट सपोज ऑन अ पर्टिकुलर एक्सचेंज, ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देर आर टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ कुछ तो एक नंबर लेते हैं, 1,000 लाख करोड़. इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ऐसा होने का चांस है? अरे एक yes, लाख 1,000 लाख करोड़ शेयर्स का क्या हुआ है? लेन देन हुआ है. अरे सच ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स आर नॉर्मली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और नॉट? अरे काफी सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, तो क्या सबके शेयर बिकते रहते हैं? यस. तो बोला क्या yes, गया है? इन लास्ट 6 मंथ, आउट ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ व्हाट, the shares traded on Bombay Stock Exchange, your company's share should be at least how much? 2%. तो 1,000 लाख करोड़ शेयर की खरीद बिक्री हुई है, तो उसका 2% मतलब कितना हुआ? 1% आ गया उसका. 10%, 10 लाख करोड़, तो 20 लाख करोड़ तुम्हारे कंपनी के शेयर क्या होने चाहिए? मार्केट में बिकने चाहिए. Means what? You are a good company, people are buying your shares, people are selling your share, there are transactions in your shares. Are you getting the point? अरे ये कंडीशन का मतलब क्या है? कि ये ऐसे शेयर नहीं है कि जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं खरीदता, लोग उसको क्या कर रहे हैं? लोग उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? yes. पिछले 6 महीने में जितने ट्रांजैक्शन हुए उसका 2% तो तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए. ओके, आगे चलो. वो अगला हावेवर मत पढ़, पहले अगला पढ़, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग. हाँ. Annualized delivery-based trading turnover of the equity shares during 6 calendar months immediately preceding the month of the reference date has been at least 10% of the annualized trading turnover of the equity shares during such 6 months period. Very good. Now check out, what do you mean by delivery based trading? There are two types of transactions, Sanju. There might be derivative type of transaction where people are speculating on the share. So Vikrant and Sanjay are entering into transaction to buy or sell of shares of Reliance Industry, but we are not actually interested in actual delivery of the share. We are going to pay the difference on the price as expected and the weighted price. कैसा हो सकता है संजय? That people are dealing in security but not actually taking delivery. Have you heard about day trading? अनुष्का, क्या कभी हमने डे ट्रेडिंग देखा है? संजय, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज डे ट्रेडिंग? No, नो. अनुष्का के लिए बोलता हूँ, डे ट्रेडिंग का क्या मतलब है? द पार्टी इन द मॉर्निंग परचेज द सिक्योरिटी इन द एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी विल गो अप इन द इवनिंग. सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है तो विक्रांत क्या करता है? शेयर ले लेता है, और शाम को 3 बजे जब मार्केट बंद होने का टाइम होता है तो उसको लगता है भाव बढ़ेगा, तो बढ़ते भाव पे वो बेच देगा. इसका मतलब क्या? उसने शेयर की कभी डिलीवरी ली, या सस्ते में लेके महंगे में बेच के फायदा किया? सस्ते में लेके. महंगे में बेच के फायदा किया. ये क्या हो सकता है? This is called as delivery based trading or mere speculation on the price. Mere speculation. Are you getting the point? तो लॉजिक ये था, in your securities, if you are interested in fast track issue, at least 10% transaction should be on what? Delivery based. मतलब 90% क्या चल सकता है? स्पेकुलेशन चल सकता है. Are you getting the point? अरे 90% पार्ट ऑफ यूर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन माइट बी स्पेक्युलेटिव. क्या ऐसा हो सकता है? ह्यूज क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन इन शेयर मार्केट आर एक्चुअली स्पेक्युलेटिव, दे आर नॉट डिलीवरी बेस्ड. इज दैट करेक्ट?
है ना? मार्केट में सट्टे वाले लोग ज्यादा होते हैं या नॉर्मल वाले लोग ज्यादा होते हैं? संजय, व्हाट इज योर ओपिनियन? हु आर मोर? What kind of investors are on the higher side? Normal investor or speculative investor? अरे उल्टा बोल रहा है. In normal market, speculative investors are more. Normal investors are low. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? वो मेजोरिटी लोगों को क्या चाहिए? प्राइस डिफरेंस में ही पैसा चाहिए. So, if you wish to have an FPO, at least 10% of your trading turnover should be from the delivery based. तो सट्टे वाले लोग कम रहे. Are you getting the point? One more condition is there, LODR condition, compliance with LODR. The issuer has in compliance with the equity share listing agreement, that is LODR, for a period of at least 3 years. Same logic. If you are listed on stock exchange, for listing you have to fulfill LODR or not. अरे अगर तुम्हारी कंपनी लिस्ट है तो क्या तुमको LODR भी एप्लीकेबल है? Yes. तो एलओ तुमका 3 साल लिस्ट हो तो क्या ऑटोमेटिकली एलओडीआर भी 3 साल के लिए होंगे? यस. सो देर शुड नॉट बी एनी ऑफेंस अंडर एलओडीआर एंड अदर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. हैव यू गॉट द पॉइंट? आगे चलो. संजू, इन्वेस्टर कंप्लेंट्स. Very good. So what do you mean by that? That under new law there is a available there is a portal available for the investor where they can raise their complaints. सही है? अरे every company might have different kinds of complaint. Vikrant, the holders of Tata Limited, is complaining that I am not receiving dividend for last two annual general meeting. Anushka is complaining that I sold my securities to Chirag, but the company is not updating the record. Correct? Sanjay Kumar, the investor, might complain that I am not getting the annual reports of the company. Anushka is complaining to the company that she is not getting the invitation to attend the जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. क्या हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना प्रॉब्लम हो सकता है? क्या प्रॉब्लम अलग अलग भी हो सकते हैं? अरे एवरी इन्वेस्टर कैन हैव इट्स ओन प्रॉब्लम और नॉट? Yes. वेरी गुड. हना इन्वेस्टर है, वो बोल रही है मेरा नाम ही गलत हुआ है. आई एम हैविंग 2N इन माई नेम बट इन सर्टिफिकेट देर इज ओनली 1N. क्या ये भी कंप्लेंट हो सकता है? अरे मिस प्रिंटिंग Yes. इन नेम, कैन दैट बी ऑल्सो कंप्लेंट? तो कुछ भी कंप्लेंट हो सकता है. तो रूल क्या बोला गया है? दैट कंपनी हैज redressed at least 95% of the complaints received from the investor. तो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इफ इन्वेस्टर्स आर कंप्लेनिंग, इट इज योर ड्यूटी एज अ कंपनी टू रिड्रेस देयर प्रॉब्लम. समझ आया? अरे Yes. ये इसमें समझने ऐसा कुछ ना समझने ऐसा कुछ नहीं. इट इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड. 95% ऑफ द कंप्लेंट्स आर सॉल्व. सो सपोज देयर आर 200 कंप्लेंट्स in the last quarter. Out of that, 5% means 10 complaints are still pending, and you have resolved how much? 190 complaints. So is this a good sign? अरे 200 कंप्लेंट आए, तुमने 190 रिजॉल्व किए, 10 अभी तक पेंडिंग है, तो क्या चलता है? यस, क्योंकि 10 मीन्स 5%. मगर ये उल्टा है. 100 केसेस आर पेंडिंग एंड 100 आर रिजॉल्व. सो आर यू अ गुड कंपनी? आर यू सॉल्व रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेस्टर्स? अरे आउट ऑफ 200 अनुष्का 100 ही सॉल्व हुए, 100 हुए नहीं. बराबर? ये अच्छी अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है. वेरी गुड. तो ऐसे लोगों को क्या अलाउ नहीं है? अरे ऐसे लोगों को क्या अलाउ नहीं है? ऐसे लोगों को क्या अलाउ नहीं है? फास्ट ट्रैक एफपीओ. आर यू Faster. गेटिंग द पॉइंट? सो सच कंपनीज आर Yes. नॉट अलाउड फॉर एफपीओ. आगे चलो. नंबर ऑफ शो कॉज नोटिस. दिस इज ऑल्सो वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड. नो शो कॉज नोटिस, करेक्ट, have been issued by the board, means the SEBI, and pending against the issuer or promoter or whole time directors. Show cause notice means what? That whenever you are not performing well, someone is going to complain against you, and SEBI and the authority is going to ask the reasons why you are defaulting. क्या सही है? शो कॉज मतलब क्या? तुमने कुछ तो गड़बड़ की है, तो क्या रीजन है जिस वजह से गड़बड़ की? क्या ऐसा पूछ सकते हैं तुमको?
Yes. वेरी गुड. तो लॉजिक क्या है? नो शो कॉज नोटिस शुड बी देयर. So hypothetically, the company is a good company or not? What do you think? There is no show cause notice. Means this is a good thing or not? Very, it's a good company. Check out the next one. No alleged violation. In case of issuer or the promoters of the company or the director of the issuer has settled any violation in securities law through the settlement mechanism. In next year, in final, you are going to learn that there is a scheme of what? Settlement mechanism. अनुष्का ये दिमाग में डालिए, नया पॉइंट है. सीक्वेंस कैसा होता है हमेशा? टिपिकल केस देख. द कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म सर्टन थिंग, बराबर. एंड इन दैट केस सपोज कंपनी इज नॉट कंप्लाइंग विथ 2 3 4 points in a particular law or regulation. क्या सही है? So in that case, the SEBI and the other authority is going to give you the show cause notice. There will be a court case. There can be a case against you. क्या ऐसा होने का चांस है अगर तुमने गड़बड़ी की तो? Yes. हाँ, तो इसमें सिस्टम ये है. इन आवर सिस्टम इन इंडिया वी हैव द सिस्टम ऑफ सेटलमेंट मैकेनिज्म. मींस व्हाट? अगर तुमने कुछ गड़बड़ की हो तो ये चीज तुम क्या कर सकते हो? सेटल कर सकते हो. सेटल कर सकते हो मतलब यू हैव टू पे पेनल्टी टू whom? द अथॉरिटी. तुमने कुछ तो गड़बड़ काम किए, तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई रेगुलेशन ब्रीच किया है, बराबर. तो इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन ब्रीच किया और गवर्नमेंट तुमको बोल रही है क्या करो? 50 लाख रुपए पेनल्टी भरो, नहीं तो हम तुम पे क्या करेंगे? कोर्ट में केस करेंगे. अभी आराम से आंसर दो, क्या अच्छा है? कोर्ट केस चलाना या पैसे भरना? पैसे भरना. वेरी गुड. तो ये पैसा भर के जब मामला सेटल करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? सेटलमेंट. No settlement. बराबर. तो ये ऐसा सेटलमेंट करते हैं. तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या? कंपनी ने क्या पहले कोई गड़बड़ी की थी? Yes. Very good. So when you are under settlement, the pre-assumption is there is an offense on your side and you are settling the dispute. Correct? तो यहाँ पे क्या बोला है? No alleged violation means what? The if the issuer or promoter or the group of company or the directors, correct, settled any violation by the settlement mechanism in past 3 years, correct, then the disclosure of such compliance shall be made in the offer document. मतलब सेटलमेंट करना गलत है या सेटलमेंट किया मगर बोला नहीं, ये गलत है? सेटलमेंट किया पर बोला नहीं, ये गलत Very है. good. So if you are, Sanju, are you getting the point that as the law itself has permitted the settlement scheme, it is not illegal to settle the dispute. Is that so? Yes. But the twist is if you are having such kind of settlement, you have to mention it specifically in offer document. Are you getting the point? सेटलमेंट करना गलत नहीं है मगर जो किया है वो उनको बोलना पड़ेगा. सो द पीपल विल बी अवेयर. अवेयर व्हाट? दैट दीज कंपनी हैज नॉट परफॉर्म एज पर द लॉ इन द पास्ट. हैव यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Very good. So this is the condition. One more condition is equity shares of the issuer has not been suspended from the trading on a disciplinary measure in last 3 years. ये भी नया पॉइंट है. सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? अगर कुछ ये हो जाता है, क्या हो जाता है? डिफॉल्ट हो जाता है तो सेबी बोलती है द द डीलिंग इन द सिक्योरिटीज शुड बी सस्पेंडेड. अनुष्का लिमिटेड के लोग सब फ्रॉड कर रहे हैं. अनुष्का लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है तो अभी स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा कि आगे क्या नहीं करना? नो डीलिंग इन व्हाट? शेयर्स ऑफ अनुष्का लिमिटेड टिल द मैटर इज रिजॉल्व. कैसा हो सकता है? अरे कैन देयर बी सस्पेंशन ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग? अनुष्का, क्या तेरे सिक्योरिटी का सस्पेंशन हो सकता है? आंसर है यस. मगर अगर ऐसा Yes. होता है तो ऑटोमेटिकली तू अच्छी कंपनी नहीं है, तू क्या नहीं निकाल सकती? फास्ट ट्रैक नहीं निकाल सकती. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो क्या ये लंबा चौड़ा है? और यू स्टिल वी हैव टू मोर टाइप of condition. Yes, let us check out. There is no conflict of interest between the lead merchant banker and the issuer. करेक्ट. सो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मर्चेंट बैंकर और इशूअर में. एंड लास्टली फॉर ऑडिट क्वालिफिकेशन सी इफ एनी,
Correct. For the financial for which the accounts are disclosed in the offer document, the issuer shall provide the restated financial statement after the adjusting the impact of audit qualification. Have you heard about audit qualification, No. संजय? क्या तुझे audit qualification मालूम है? Audit qualification means what? Whenever you are going to prepare your profit and loss and balance sheet based on your cash book and other kind of transaction, the independent third party expert, the chartered accountant, is going to verify the documents, voucher, entries, and other accounting record. Are you aware of auditing? अरे जब तुम काम करते हो अकाउंटिंग का तो क्या ये बाहर का आदमी आके चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सब चेक करता है? Yes. तो इसे क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑडिट. Now the twist is, if you have written all the maintain all the accounts in proper manner, he will give you certificate that I have audited the accounts of Anushka Limited and the accounts are showing true and fair view. मतलब वो सब सही accounts लिखे. क्या ऐसा हो सकता है? Yes. But in typical cases, the auditor may go against your disclosure. तुमने कुछ जानबूझ के लिखा ही नहीं या कोई पेपर ही नहीं दिखा है तो वो क्या लिखेगा? That though the company is showing sales worth rupees 5 crore to Vikrant Limited, we are not able to check out the document because the vouchers are missing. कैसा हो सकता है? ये अनुष्का ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि मैंने 5 करोड़ का माल विक्रांत को बेचा, पूछा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाओ तो वो बोल रही है नहीं वो कागज गुम गए. क्या ऐसा होने का चांस है? अरे बड़े बड़े Yes. कंपनी में ऐसा गड़बड़ी होने का चांस है. यस. तो जब ये रिमार्क लिखेगा, व्हेन द ऑडिटर इज गोइंग टू राइट सच टाइप ऑफ कमेंट और एडवर्स कमेंट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अरे ऐसा एडवर्स लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑडिट क्वालिफिकेशन. समझ आया? तो ऑडिट क्वालिफिकेशन हुआ मतलब तुम्हारा सब सही चल रहा है कि गलत चल रहा है? सब सही Not चल fair. रहा है. Very good. So whenever you are having audit qualification, then what you have to do? Now check out. You have to restate the financial statement. Means what? That if the data for 5 crore rupees sale is not available, the P&L should be rewritten and the new sales should be now deducted with the quantum of objection, that is 5 crore. तो अगर पहले जमाने में अनुष्का दिखा रही थी कि मेरा सेल कितना है, 100 करोड़ का है, बराबर, और मेरा प्रॉफिट कितने का है, 20 करोड़ का है. अभी ऑडिटर ने निकाला क्वालिफिकेशन तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ 100 करोड़ शी शुड शो द सेल्स एट 95 करोड़ ओनली. करेक्ट. अरे 5 करोड़ का अगर वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही नहीं मिला तो ये ना 100 का कितना बनाओ, 95, तो क्या प्रॉफिट भी अभी 20 रहेगा या प्रॉफिट भी घट जाएगा? When your sales are reduced from 100 to 95, your profitability is also reduced from 20 to 15 or not. Barabar? So this is called as what? Restated P&L. So what is the rule? That there should not be any audit qualification, and if there are audit qualification, your financial statement should be restate. Have you got the point? Yes. So if you are fulfilling all these conditions, then only you are allowed to have an FPO in fast track mode. तो क्या ये सादे कंडीशन है या स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, डिफिकल्ट कंडीशन है, क्या लगता है तुमको? व्हाट डू यू थिंक? इज दीज आर इजी कंडीशंस और स्ट्रिंजेंट कंडीशन, संजय? है ना? क्या लगता है? कोई भी कंपनी ये सभी कंडीशन फुलफिल कर पाएगी क्या? व्हाट डू यू थिंक? Yes. है ना? व्हाट डू यू थिंक? ये इतने ए बी सी डी ई एफ जी एच, वेदर ऑल दीज आर इजी कंडीशंस और डिफिकल्ट कंडीशंस? If you are not aware regarding the actual work, these are the difficult condition, because every time there are certain kinds of offense, there are normal problems at company. Check out. First one is what you should be listed for what? 3 years. Share should be in demat form. Capitalization should be 1,000 crore. Trading turnover should be 2%. Delivery based trading should be for 10%. All compliance of LODR is necessary. 95% of the grievances are to be completed. If there is show cause, you have to mention. There should not be any settlement. If there is settlement, you have to mention. Disciplinary measure should not be there in 3 years. Conflict of interest should not be there. So all these are what?
डिफिकल्ट कंडीशन, अरे ये एक नहीं, ये सभी मिला के ही क्या है, डिफिकल्ट है. सो हाइपोटिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कंपनी टू गो फॉर फास्ट ट्रैक. कौन कर सकता है सिर्फ, अभी उल्टा क्वेश्चन पूछो, वो पूछ रहा हूँ, बोलो. ये कौन करेगा? जो एकदम अच्छी कंपनी होगी, जिसके सब एकदम एक्सपर्ट काइंड ऑफ पीपल होंगे, जो जल्दी से सबके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कोई क्या नहीं हो रहा है, गलती नहीं हो रही है, टोटल ड्यू डिलीजेंस अच्छा है, क्या वही लोग एफपीओ निकाल सकते हैं इन फास्ट ट्रैक मोड? संजय, आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, सो इट इज नॉट फॉर एवरीवन. कौन सा वाला पार्ट? द फास्ट ट्रैक इशू. ओके, लेट अस गो फर्दर. Right issue and the conditions. I think you are aware of right. Hmm? Then preferential issue, we are aware. What is preferential issue? अनुष्का एक बार पढ़. Preferential issue. Preferential issue means an issue of specified securities by a listed issuer to any select person or group of persons on a private placement basis in accordance with Chapter 5 of these regulations and does not include वो any छोड़, does offer not of include छोड़, does not include छोड़. Preferential issue का क्या मतलब हुआ? Preferential issue is the issue made by the listed issuer to whom select person. What do you mean by select person? It is not open to general public at large. क्या सही है? That whenever you are having an IPO, any person can invest in your security or not. अरे जब तुम आईपीओ निकालते हो, आम जनता को शेयर बेचते हो, तो कोई भी जनता में से आदमी शेयर ले सकता है. और इन आईपीओ इट इज allowed for every investor, every person. Correct? But in preferential issue, what is the story? Every person is not allowed to invest in your company, but only a select person, or what, a group of person. मतलब ये तमाम दुनिया के लिए ओपन है या ओनली सिलेक्टेड पार्टी के लिए है? ओनली selected सिलेक्टेड पर्सन. person. सो कॉमन सेंस है, वेदर दीज कैन बी टेकन एज नोन पर्सन. अरे हम अपने शेयर बेचना चाहते हैं, मगर सबको नहीं बेच रहे, सिर्फ किनको बेच रहे? सिलेक्टेड पर्सन. सो दीज सिलेक्टेड पर्सन आर ऑटोमेटिकली नोन पर्सन टू द कंपनी और नॉट. ये कोई तो बड़े लोग होंगे जो हमको मालूम है कौन है, और हम उनको ही शेयर बेच रहे हैं. क्या ऐसा होने का चांस है? अरे करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो फिर से एक बार देखो, सपोज विक्रांत इज इंटरेस्टेड इन रेजिंग 500 करोड़. विक्रांत को कितने पैसे चाहिए? 500 करोड़. वेदर ही कैन गो फॉर एन आईपीओ? अरे 500 करोड़ चाहिए. अनुष्का माइक चालू ही रख. तो क्या मैं आईपीओ निकाल सकता हूँ? Yes. क्या जनता को 500 करोड़ के शेयर बेच सकता हूँ? Yes, Yes. but it will take time and money and efforts to collect funds from general investor. क्योंकि कोई 15,000 करेगा, कोई 20,000 करेगा, ऐसे छोटी छोटी रकम करके 500 करोड़ होने तक क्या टाइम लगेगा? टू मेनी इन्वेस्टर्स विल बी देयर और नॉट? टू मच रिकॉर्ड कीपिंग Yes. विल बी देयर और नॉट? बराबर. Yes. सो इंस्टेड ऑफ दैट रेजिंग फंड्स थ्रू सच पर्सन, क्या हो रहा है? अभी टिपिकल केस देख. दैट विक्रांत लिमिटेड इज अप्रोचिंग टू इन्वेस्टर्स. फर्स्ट वन इज अनुष्का वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, एंड अनदर इज संजय म्यूचुअल फंड. ये दो कोई बड़े लोग हैं. मैं उनको बोलता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग शेयर्स वर्थ ₹5 करोड़. आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी? तो अनुष्का बोलती है, शो मी योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोजेक्शन. मैंने दिखाया सब. अनुष्का बोलती है, ओके, मैं 200 करोड़ के शेयर लूंगी. बराबर. संजय म्यूचुअल फंड Yes. इज देयर फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. संजय बोल रहा है कि मैं 300 करोड़ के शेयर लेता हूं. Now tell me, is it easy for me to sell securities to only two investors and collect 500 crore instead of having an IPO and selling it to thousands of investors? आसान क्या है? दो लोगों से IPO is, बोल संजय तू बोल. What is easy, to have an IPO or to have a private placement? अरे उल्टा बोल रहा है. आई एम इन नीड ऑफ 500. आई एम विक्रांत लिमिटेड. आई एम इंटरेस्टेड इन 500 करोड़. हु इज इन्वेस्टिंग इन माय कंपनी? दैट इज इमटेरियल. If I'm going to approach general public, I have to appoint merchant banker, I have to print prospectus, I have to print form, I have to appoint broker, I should have escrow account, पेपर में एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, टीवी पे एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, तब जाके लोग पैसा देंगे. तो क्या ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? सो आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट?
I am interested in 500 crore. So if two people, Anushka, क्या उसका खत्म हुआ क्या? भेजा है। हेलो हेलो हेलो, हेलो एम सर। ऑडिबल? हाँ, सो आई एम इंटरेस्टेड इन Yes, sir. 500 करोड़। अमन भी आ गया। अमन, मेरे को चाहिए 500 करोड़। तो मैं क्या आम जनता से शेयर बेच के पैसा करूं, या दो लोग जो मेरे को 200-300 करोड़ दे रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए? सर वो ज्यादा अच्छा है, 2-3 दिन वाले। Very good. Are you getting the point? So this issue is to be called as what? Preferential issue. Sanju, are you getting the point? Because I am able to sell my securities in bulk. But there is exception. क्या बोला है? And does not include the offer for specified securities made through what? Employee stock option scheme, employee stock purchase scheme, issue of sweat equity and depository receipt and other things. अभी आराम से देखो. When you are issuing stock option shares to your employee, whether employee are known person to you, Vikrant Limited is running a software company. There are सर 20 programmers in my company. I'm issuing shares to my 20 programmers under employee stock option नोइंग scheme. नोइंग पर्सन तो सर। क्या क्या ये नोन पर्सन है? सर ये यस। तो ये नोन पर्सन, ये भी नोन पर्सन है, तो क्या इनको शेयर दिए तो क्या मुझे प्रेफरेंशियल इशू वाला रेगुलेशन अप्लाई होगा? क्योंकि Yes. अनुष्का समझ आ रहा है रेगुलेशन क्या बोल रहा है? Yes. प्रेफरेंशियल इशू मींस द इशू टू व्हाट? सिलेक्ट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या आम जनता ये शेयर ले सकती है या मेरे एम्प्लॉय ले सकते हैं सिर्फ? सर आम जनता नहीं ले सकती, आपके अरे एम्प्लॉय ले ईसॉप, सकते। ईसॉप है ना, ईसॉप किसको मिलेगा? सिर्फ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। मतलब किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को ही एम्प्लॉय मिलेगा। को, हाँ एम्प्लॉय नाम ही सजेस्ट हो रहा है एम्प्लॉय। आराम से देख, सिचुएशन देखो। सपोज देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज ए लिमिटेड, बराबर, एंड ए लिमिटेड इज हैविंग एन आईपीओ। हु आर गोइंग टू सब्सक्राइब फॉर आईपीओ? जनरल पब्लिक, करेक्ट, बराबर। बट सपोज ए लिमिटेड इज हैविंग प्रेफरेंशियल इशू। नाउ हु आर गोइंग टू बाय शेयर्स अंडर प्रेफरेंशियल इशू? अभी हमने देखा दे आर द नोन पर्सन, और क्या? सिलेक्ट ग्रुप, करेक्ट। मतलब सबको अलाउ है या सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही अलाउ है? सिलेक्टेड। सिलेक्टेड, सिलेक्टेड लोगों को बेचा तो वो क्या बन गया? प्रेफरेंशियल्स। प्रेफरेंशियल इशू। अभी आराम से आंसर दो। जब ए लिमिटेड अपने एम्प्लॉय को बोलती है, क्या बोलती है? कि तुमने हमारे कंपनी में काम किया, अच्छा काम किया, इसलिए हम तुमको ईसॉप दे रहे जिसमें तुमको शेयर्स मिलेंगे। अभी आराम से आंसर दो। क्या हियर ऑल्सो इन आईपीओ शेयर्स आर इशूड? अरे आईपीओ में भी क्या शेयर बिकते हैं? Yes. यस। क्या क्या प्रेफरेंशियल शेयर इशू में भी शेयर्स बिकते हैं? Yes. नहीं सर। अरे प्रेफरेंशियल इशू में भी शेयर ही बिकेंगे ना, जो नोन लोग होंगे उनको। और हाँ जी ईसॉप हाँ में जी, भी क्या बिकेंगे? शेयर से शेयर ही बिकेंगे। बिकेंगे। तो हाइपोथेटिकली हर जगह पे शेयर ही बिक रहे हैं। इज दैट सो? यस Correct. But the twist is, now check out, whenever you are issuing securities to your employee, whether employee are selected person, सब लोग ये ईसॉप ले सकते हैं या सिर्फ एम्प्लॉय ले सकते हैं? सर एम्प्लॉय जो सिलेक्टेड है ओनली, तो जो ये कौन नोन हो है। गए फिर? ये भी सिलेक्टेड पर्सन नहीं हो गए, ये भी नोन पर्सन ही हो गए। क्या सही है हाँ जी सर। अनुष्का? क्या ये नोन पर्सन है? सर नॉन पर्सन है। बराबर। तो ये भी क्या होना Yes, चाहिए sir. टेक्निकली? अरे दिस शुड ऑल्सो बी टू बी टेकन एज व्हाट? प्रेफरेंशियल इशू। बट Preference व्हाट choice. रेगुलेशन सेज? अरे हम रेगुलेशन देख रहे हैं, रेगुलेशन क्या बोल रहा है? बट डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड का क्या मतलब? अरे वो इसमें इंक्लूड कौन नहीं लोग? है उसमें. वो इंक्लूड नहीं है। कौन इंक्लूड नहीं है? एंड अभी हमने ऑफर्स। देखा कौन इंक्लूड नहीं है। ये ईसॉप वाले लोग इंक्लूड नहीं है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज फॉर ईसॉप देर आर सेपरेट गाइडलाइन फॉर ईसॉप। ईसॉप के लिए अलग से रेगुलेशन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो भले ईसॉप में Yes. हम नोन लोगों को शेयर देते हैं, वो नोन होने के बावजूद भी वो प्रेफरेंशियल इशू नहीं है। वो कौन है? ईसॉप है। संजू, आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट एज अ सेपरेट रेगुलेशन एग्जिस्ट फॉर ईसॉप, ईसॉप शुड नॉट बी कवर्ड अंडर प्रेफरेंशियल इशू, दो वी आर सेलिंग शेयर्स टू द नोन इंडिविजुअल्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर 2021 है सर।
वो ईयर वियर का कोई लेना देना नहीं, लॉजिक समझ अमन। हाँ आर यू जी। गेटिंग द पॉइंट? नया पॉइंट समझो, कैन देयर बी स्वेट इक्विटी शेयर्स? हैव यू हर्ड अबाउट स्वेट इक्विटी? ए लिमिटेड कंपनी का कोई तो प्रमोटर होता है, डायरेक्टर होता है, उन्होंने कंपनी के लिए मेहनत की है, ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है? स्वेट स्वेट इक्विटी। इक्विटी देता है। अभी फिर से एक बार देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन एट अ लार्ज, और द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये अंदर के लोग हैं क्या, उनको ही सिर्फ स्वेट इक्विटी मिलता है? सर इनसाइडर लोगों को मिलेगा जो भी इनडायरेक्टली, मतलब ये कौन लोग है? इनसाइडर मींस वेदर दे आर सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन और नोन पर्सन टू द कंपनी और नॉट। पर्सन ऑफ द कंपनी, नॉन पर्सन है सर ये। अनुष्का समझ आ रहा है क्या, ये भी एक नोन लोग ही है? संजय, आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट स्वेट Yes, इक्विटीज right. आर ऑफर्ड टू द डायरेक्टर्स, promoters, so they are also known person, but whether swayed equity is covered under preferential issue? whether सर sw- नो no, सर, नो सर। no, very सर good, why? सर, सर इसका भी जो रेगुलेशन है अलग है, Very good. 2022 That 12 we है सर। got a separate regulation रेगुलेशन for what? Sweat equity. स्वेट तुमको इक्विटी। समझ आ रहा है क्या हो रहा है वो? तो हर बार नोन पर्सन को दिया तो प्रेफरेंशियल इशू है ऐसा नहीं बोलना है, डिपेंड करता है, क्योंकि कई जगह पे क्या दिए है हमने देखा, अलग सेपरेट से से रेगुलेशन है। दिए हैं। कौन कौन से लोग हैं, फिर से एक बार पढ़ो, क्या बोला है? दैट दिस डज नॉट इंक्लूड, हाँ पढ़ो, क्या बोला है? डज नॉट इंक्लूड का स्टोरी। Does not include an offer of specified securities made through employee stock option scheme, हम्म employee stock purchase scheme, or an issue हम्म of sweat equity shares or हम्म depository receipt issued in a country outside India or a foreign securities. अभी फिर से एक बार, फॉर डिपॉजिटरी रिसीट वी हैव सेपरेट प्रोविजन फॉर एडीआर एंड जीडीआर और नॉट। Yes, sir. अरे तो इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ कि नोन लोगों को दिया तो उसको सब वाले सिनारियो में प्रेफरेंशियल इशू नहीं बोलना, पहले चेक करना है क्या ये स्वेट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर वो या स्वेट है तो depository उसको क्या लगाना है फिर? वो अरे अलग अगर से वो स्वेट है तो अलग से उसको स्वेट आई। इक्विटी वाला लगाओ। अगर वो हाँ जी, हाँ जी। एम्प्लॉय है तो उसको ईसॉप वाला लगाओ। आर यू इसको गेटिंग द पॉइंट? डिपॉजिटरी अगर वो एडीआर डिपॉजिटरी है तो एडीआर का लगाओ। अगर डिपॉजिटरी इसमें से वाला कुछ लगाओ। भी नहीं है, अभी आराम से उल्टा बोल, सपोज यूर इशू इज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ दीज थिंग्स, देन देन सर वो प्रेफरेंस शेयर्स वेरी कहलाएगा। गुड। तो ऐसे सिनारियो में फिर बोलना है भाई ये क्या हो रहा है? प्रेफरेंशियल इशू हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो प्रेफरेंशियल इशू को यू कांट डिफाइन प्रेफरेंशियल इशू डायरेक्टली, यू हैव टू चेक इट आउट इन अपोजिट वे, वेदर एनी अदर सेपरेट रेगुलेशन एग्जिस्ट फॉर सच काइंड ऑफ इशू, एंड इफ द आंसर इज यस देन डोंट गो फॉर प्रेफरेंशियल इशू यस, रेगुलेशन। यस। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? बिल्कुल सर। अनुष्का समझ आ रहा है? अनुष्का नहीं है तो अभी समझ आ रहा है अमन कि जब हम जनरल पब्लिक को शेयर बेचते हैं तो ये क्या प्रेफरेंशियल होता है या ये नॉर्मल आईपीओ होता है? अरे सर जनरल प्रेफरेंस शेयर। पब्लिक, आम जन, अरे जनरल हाँ पब्लिक को बेचा मतलब आम जनता को बेचा, उधर सिलेक्टेड पर्सन नहीं है, हमको मालूम नहीं है वो कौन है, तो हाँ ये जी कौन सा हुआ? सर, ये आईपीओ। ये ट्रेडिशनल आईपीओ हुआ। और जब नोन लोगों को बेचेंगे तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या कवर हो रहा है, उसमें अगर वो फिट नहीं हो रहा है फिर हमको बोलना है कि ये क्या है, प्रेफरेंशियल इशू है। प्रेफरेंस आर शेयर्स। यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। अभी नया स्टोरी है क्या, द इशूअर हु इज इनएलिजिबल टू मेक प्रेफरेंशियल इशू, नया पॉइंट है। ये कौन लोग हैं जिनको ये प्रेफरेंशियल इशू, मतलब नोन लोगों को, जहां पे हमने एग्जांपल देखा दैट विक्रांत इज इंटरेस्टेड इन रेजिंग 500 करोड़ एंड अनुष्का वेल्थ मैनेजमेंट इज रेडी टू इन्वेस्ट 200 करोड़ एंड एस म्यूचुअल फंड इज रेडी टू इन्वेस्ट 300 करोड़, तो ये हो गया प्रेफरेंशियल इशू। क्या सही है? बराबर। मगर टिपिकल केस में क्या बोला है? द फॉलोइंग काइंड ऑफ इश्यूअर्स आर नॉट एलिजिबल। पढ़ना चालू करो, कौन लोग एलिजिबल नहीं, बोलो। So, an issue shall not be eligible to make a preferential issue if any of its promoters or directors is a fugitive economic offender, or if it has any outstanding dues to the board, the stock exchanges, or the depositors. पहला However, the पॉइंट है, same आराम से आराम से, कभी इतना फास्ट नहीं पढ़ना अमन, जितना भी लॉ के प्रोविजन पढ़ने हैं वो तुझे आराम से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने हैं, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, उधर रुकना है। ठीक Okay, है सर। what is the first condition? That if you are interested in preferential issue, check out whether you are a fugitive economic offender declared by the court. Fugitive economic offender मतलब क्या? इधर कोई पैसे का धांधली किया है और फिर फॉरेन कंट्री में भाग गया। This is called as what? Fugitive Fugitive economic economic offender. 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 Are you getting the point? Offender means the person who is performing illegal activities. Sanjay, are you getting Yes, the point? yes, sir.
So if your promoter directors are governed under fugitive economic offender tag, you are not allowed to have the preferential issue. क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल है सर. बराबर. सेकंड, हाउएवर, अगला पढ़ो. However, the same shall not be applicable in a case where such outstanding dues are the subject matter of a pending appeal or proceedings, अभी एक which नया has पॉइंट रह गया, एक सेकंड, ऊपर का एक पॉइंट रह गया. एंड व्हेन देयर आर आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी. आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द बोर्ड मींस व्हाट? अभी हमने ऊपर देखा था दैट यू हैव परफॉर्म्ड एन इलीगल एक्टिविटी एंड देयर इज अ सेटलमेंट स्कीम एंड the government and the CB or any other authority is charging you a certain kind of penalty, but you have not paid the penalty. तुमने पीछे कुछ तो गड़बड़ की है, सेबी ने बोला है 5 करोड़ रुपए लाके भरो और तुमने वो पैसा भरा ही नहीं. कैसा होने का चांस है? yes अरे sir. गवर्नमेंट तुमको पेनल्टी लगा रही है, तुम पैसा ही नहीं भर रहे, कैसा होने का चांस है? यस. तो Yes sir. अगर तुमने ऐसा पैसा नहीं भरा है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या नहीं अलाउ? प्रेफरेंशियल इशू पे शेयर बेचना अलाउ नहीं है. इनडायरेक्टली मींस व्हाट? तुमको जो भी पेनल्टी बोला है उसको क्या करो? Yes, sir. हाँ, उसको पे करना पड़ेगा पहले. हाँ, उसको पे करना पड़ेगा. अभी टिपिकल केस देख. बट नाउ सपोज सिचुएशन इज लाइक दिस दैट द सेबी हैज ऑर्डर्ड अमन इंडस्ट्रीज टू पे 5 करोड़ रुपीज. नाउ सी अमन इंडस्ट्रीज इज अप्रोचिंग सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल. सेबी ने कोई ऑर्डर दिया तो क्या उसके खिलाफ तुम्हें सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करना अलाउ है? Yes sir. All हाँ, over. तो तू 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 अभी क्या कर रहा है? सेबी ने बोला 5 करोड़ भर, तू सैट में गया और बोल रहा है दैट दिस इज इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, आई एम नॉट गोइंग टू पे 5 करोड़ रुपीज एंड द केस इज पेंडिंग. तो क्या केस का रिजल्ट निकल गया है या अभी भी पेंडिंग है? सर पेंडिंग है. तो क्या ऐसी सिचुएशन में तुझे बोला जाएगा कि यू आर नॉट पेइंग ड्यूज? अरे अभी जब डिसीजन ही फाइनल नहीं हुआ है तो क्या ये रकम 5 करोड़ अभी आउटस्टैंडिंग ड्यूज के डेफिनेशन में आएगी? नहीं, क्योंकि अभी इस पर भी अभी भी क्या चालू है? डिस्प्यूट अभी चालू भी है. समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? वो तो जिनका डिस्प्यूट चालू है तो ऐसी केसेस का नाम क्या नहीं आता? आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं आता. पर सैट ने भी तेरे को बोला नहीं, तुझे 5 करोड़ भरने पड़ेंगे. तू सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला 5 करोड़ भरने पड़ेंगे. तो क्या अभी तुझे 5 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे? सर भरने पड़ेंगे बिल्कुल. वेरी गुड. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी सर. Very good. So, what is the first condition? That the person should not be a fugitive economic offender, and secondly, there should not be any outstanding dues. Then you can have the preferential issue. Correct? अरे समझ आ रहा है क्या? यस सर. नया कंडीशन पढ़ो. सर ये पढ़ा था ना. however the small अगला अगला अगला. preferential issue of specified securities shall not be made to any person who has sold or transferred any equity shares of the issuer during the 90 trading days preceding the relevant date. वेरी गुड. सो फर्स्ट पार्टीज, अभी आराम से देखो, एक डायग्राम देखते हैं तो हमें समझ आएगा. ओके, व्हाट इज द पोजीशन नाउ? चेक आउट. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिनेरियो वेयर ए लिमिटेड गॉट वन इन्वेस्टर मिस्टर अमन. ए लिमिटेड में अमन ये क्या है? शेयर होल्डर है. ठीक है. अमन ने क्या कर दिए? ऑन 1 अगस्त 2023 अपने पास जितने शेयर थे, मान के चलो 5 करोड़ के, वो क्या कर दिए? सेल कर दिए. ठीक है. तो क्या कंपनी का अमन ये इन्वेस्टर था? यस. बराबर. क्या उसके पास 5 करोड़ के शेयर थे? यस. उसने वो शेयर क्या कर दिए? मार्केट में बेच दिए. क्या ऐसा नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता रहता है? that the holder or investors in a company sell their share. क्या ऐसा होने का चांस है? यस सर. अभी ट्विस्ट देखो. नाउ द पॉइंट इज आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑन 1 अगस्त, आगे चल के 1 सितंबर 2023 को, मतलब एक महीने के बाद, ए लिमिटेड इज अगेन ऑफरिंग शेयर्स टू whom? मिस्टर अमन. ऑन व्हाट? द प्रेफरेंशियल बेसिस. मतलब आम जनता से अमन, ए लिमिटेड क्या कर रही है? पैसा नहीं ले रही है. किससे ले रही है? अमन से ही ले रही है. बराबर. अमन फिर से एक बार क्या कर रहा है? 5 करोड़ रुपए दे रहा है और कंपनी से क्या कर रहा है? खरीद रहा है शेयर्स. कौन से बेसिस पे? प्रेफरेंशियल बेसिस पे. अभी आराम से आंसर दो. व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर इन दिस केस?
अनुष्का तुझे समझ आया है? ऐसा आदमी जिसने अभी अभी तुम्हारे कंपनी के शेयर बेचे, उसको ही तुम वापस शेयर दे रहे हो, तो क्या होने का चांस है? Sanjay, are you getting the point? That Aman was your investor. He has already disposed of shares worth rupees 5 crore in market, and again company is issuing him 5 crore worth rupees shares on preferential basis. क्या होने का चांस है? जल्दी बोलो. अरे assumption is Aman is going to again resell such shares 5 crore in the market for 7 crore. अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है, तो क्या हम इसको ही शेयर देते रहेंगे और यही मार्केट में महंगे में बेचता रहेगा? अमन, क्या यस ऐसा सर, होने का चांस है? यस क्योंकि सर। बाकी लोगों के हाथ में शेयर ही नहीं जा रहे. शेयर किसके हाथ में जा रहे? अमन के हाथ में। अमन के. और मार्केट में अगर कोई भी डिमांड करता है शेयर, अनुष्का बोलती है हमको शेयर चाहिए, हना बोलती है हमको शेयर चाहिए, तो कौन बेचेगा? अमन ही अमन। बेचेगा, क्योंकि उसके पास है शेयर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर ये अमन को प्रेफरेंशियल शेयर, अभी आराम से देखो, अमन को ये शेयर बेचने के बजाय ए लिमिटेड ने अगर ये समझो शेयर्स किसको बेचे होते, आम जनता, जनरल पब्लिक को बेचा होता 5 करोड़ के शेयर. और अभी आगे जब मार्केट में शेयर में डिमांड आती है, तो ये आम जनता ये 5 करोड़ के शेयर 7 करोड़ में बेच रही है. तो पैसा अमन के जेब में जा रहा है, कंपनी के जेब में जा रहा है, या आम जनता के जेब में जा रहा है? अरे यू आर इशूइंग सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक, नॉट इन प्राइवेट प्लेसमेंट और काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल इशू टू ओनली वन पर्सन, मिस्टर ए. क्या ऐसी गड़बड़ी करने के बजाय तुमने जनता को बेचा होता, तो फायदा किसको होता? अमन भाई, फायदा किसको होता? फिर कंपनी को। अरे कंपनी को नहीं, जनता को फायदा होता, क्योंकि शेयर कंपनी को तो 5 करोड़ ही मिलेंगे ना. आराम से अच्छा अच्छा। ध्यान दे. अगर ए लिमिटेड ने 5 करोड़ के शेयर जनरल पब्लिक को बेचे, तो कंपनी को कितने मिलेंगे? 5 करोड़ ही मिलेंगे. समझो कंपनी ने, ए लिमिटेड ने जनता को बेचने के बजाय अमन को बेचा होता, फिर भी उसको कितने मिलते? 5 करोड़। इंडायरेक्टली किसको फर्क नहीं पड़ता? ए लिमिटेड को, क्योंकि ये किसी को भी लिमिटेड को। बेचा तो 5 करोड़ ही मिलने वाले हैं. मगर प्रॉब्लम क्या है? आम जनता को बेचा तो वो आम जनता 5 करोड़ के शेयर कल साथ में बेच पाएगी, तो सबका फायदा है वहां पे. और अगर सिर्फ अमन को ही दिया, तो फायदा किसका है सिर्फ? अमन को ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो हाइपोटिकली अजम्पशन ऐसा है कि हम जानबूझ के अमन को 5 करोड़ के शेयर देते हैं, अमन बाहर जाके 7 करोड़ में बेचता है और खुद ऊपर जाके 2 करोड़ फायदा कमाता है. अभी टिपिकल केस देखो, और ये 2 करोड़ में से थोड़ा सा हिस्सा वो ए लिमिटेड का डायरेक्टर जो विक्रांत है उसको देता है. क्या ऐसा भी होने का चांस है कि तूने मुझे ये प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर दिए, इसलिए बेच के मैं पैसे कर पाया? क्या ऐसा कोई पीछे डील भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हाँ, तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट लॉ सेज? अरे अभी हमने देखा लॉ की सर दो टिपिकल करोड़ क्या सर, है. हाँ. तो 2 करोड़, 2 करोड़ का लॉस हो रहा है ना। अगर वो जनता को बेचेगा तो 7 करोड़ मिल जाएगा। तो जनता को मिल जाएगा ना, डायरेक्टर को तो नहीं मिलेगा. तो जनता से भी क्या चाहती है? जनता का भला हो. किसका भला ना हो? और डायरेक्टर इंसाइडर को। का भला ना हो. अरे हम इंसाइडर इंसाइडर को। हो गए ना फिर. हाँ जी हाँ जी। अरे मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ, मैं तेरे को दे रहा हूँ अमन को, और तू आगे जाके बेच रहा है, तो तू और मैं, हम इंसाइडर हो गए. तो रूल क्या बोल रहा है? जिसको लास्ट 90 दिनों में, जिस जिस आदमी ने लास्ट 90 दिनों में, मतलब 3 महीने में क्या किए हो, कंपनी के शेयर क्या किए हो, बेचे हो या क्या किए हो, ट्रांसफर किए हो, तो उसको क्या नहीं देना? प्रेफरेंशियल्स। वेरी गुड. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका क्या मतलब हुआ? चेकआउट. ये एक अपने एग्जाम्पल में ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है? 1 अगस्त को अमन ने बेचा है, तो हाइपोटिकली एक महीना हो गया अगस्त का, फिर सितंबर का, फिर अक्टूबर का. तो अजम्पशन है 1 नवंबर के बाद क्या कर सकते हो तुम? दे सकते हैं। दे सकते, मगर 90 दिन तक देना नहीं है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? 3 महीने की लिमिट है सर। हाँ। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया? 3 महीने नहीं है, 90 डेज बोला है, क्योंकि उसमें ट्विस्ट क्या है, वर्ड क्या बोला गया है? 3 महीने नहीं बोला गया. क्या बोला गया हाँ, वहां पे? 90 डेज। 90 ट्रेडिंग डेज. इसका क्या मतलब हुआ? मंडे टू फ्राइडे ये एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है, मगर सैटरडे संडे तो बंद रहता है. तो हफ्ता 7 दिन का गिनना है या 5 दिन का गिनना है? 5 दिन का। वर्किंग वेरी डेज। गुड. समझ आया? तो 90 डेज तक गिनो, और उसके बाद ही तुम वो आदमी को क्या दे सकते हो? प्रेफरेंशियल्स। प्रेफरेंशियल शेयर दे सकते हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। दिस इज द स्टोरी. चलो आगे चलो. एक्सप्लेनेशन हो गया. हाउएवर वगैरह वगैरह, ये छोड़िए, ज्यादा हो गया. तो क्या तुम्हें समझ आया? क्या जो कंपनी क्या होती है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर वाले लोग होते हैं, या जिनका कोई आउटस्टैंडिंग ड्यू होता है, वो लोग प्रेफरेंशियल इशू नहीं निकाल सकते, और जिन्होंने ये 90 दिन में बेचे, वो लोग भी क्या नहीं निकाल सकते? प्रेफरेंशियल यस। इशू नहीं निकाल सकते. करेक्ट. अभी ये आसान है समझने के लिए. कंडीशंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू, क्या क्या करना पड़ता है प्रेफरेंशियल इशू निकालना हो तो?
चालू करो पहला fully paid up. All equity shares allotted by way of preferential issue shall be made fully paid up at the time fully of paid the up means allotment. what? Whatever is the price of the shares plus premium, you have to collect whole amount. तूने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का प्रीमियम लेके 20 रुपए में बेचा है, तो पब्लिक से कितना कलेक्ट करो? पूरा 20 कलेक्ट करो. आर यू Okay, गेटिंग द sir. पॉइंट? Okay, sir. ठीक है, आगे चल. सेकंड. Special resolution. A special resolution has been passed by its shareholder. its shareholder. एक special resolution passed होना चाहिए सर मतलब इसके क्या? लिए. अरे स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब किसका परमिशन होना चाहिए? अभी आराम से देखो. स्पेशल रिजोल्यूशन इज ऑफ द शेयर होल्डर. पर शेयर होल्डर की परमिशन लो. क्या इसके लिए? अरे शेयर होल्डर की परमिशन लो कि तुम आम जनता को शेयर को बेचने के लिए किसको बेचोगे? प्रेफरेंशियल बेसिस पे सिर्फ उनको बेचोगे. क्योंकि फिर से यहाँ देखो, जब स्पेसिफिक उनको बेचते हो तो आगे सिर्फ उनको होने का चांस है. तो ये actually बाकी होल्डर को भी हो सकता था. तो Yes, sir. वेरी गुड, इसलिए उनकी भी परमिशन लो. चलो. Email. मीन्स व्हाट? सर मतलब डिजिटल होना चाहिए. क्या बात है? but once the shares are independent from that type of securities are possible. बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? You can do all these things, Sanjay, when the shares are in deep form or not. When the shares are in deep form, you can get all such information from SDL and CDSL. Who is buying, how much the quantity, what price they are buying. All these are known to all when the shares are in demat form or not. ट्रैक करना आसान हो जाएगा. ट्रैक करना आसान हो जाएगा. Very good. आगे चलो. Then Compliance. Hmm. Issuer is in compliance with the conditions for continuous equity shares specified in the listing agreement with the shares. The equity shares of the issuer are listed at in relation to the reporting as a Gravel simple rule है that a company should fulfill all the conditions of LODR. और सभी तुम तुम क्या कर पाओगे? शुरू कर पाओगे. इसे बात देखो, क्या प्रेफरेंशियल इशू में कम खर्च में कंपनी को तो निकल के पूरा खर्च करके 1000 लोगों को कमीशन, कमीशन, ये वो ब्रोकर वो प्रोस्पेक्ट छापने का खर्चा, क्या ये खर्चे का काम है? आईपीओ का नहीं है. तो इसलिए कंपनियां क्या कहेगी कि वो क्या करना है? प्रेफरेंशियल इशू. मगर रूल बोल के रखा है कि शेयर फुल्ली होने चाहिए. देयर शुड बी स्पेशल शेयर देयर शुड बी लास्ट. and the in the account number and over proposed ROTs, except ROTs which will be exempt from specifying their purport liability in the security market by the SEBI. Before an application seeking in principal approval is made by the issuer to the stock exchanges, चाहिए. करेक्ट. अगला पार्ट है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्यूआईपी. क्यूआईपी शेयर किसको देते हैं? क्यूआईबी को देते हैं. क्यूआईबी होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. मतलब ये दोनों देखा था. दे बी बैंक, म्यूचुअल फंड. संजय, आर यू अवेयर ऑफ क्यूआईपी? संजय माइक बंद करके बैठा ना. है ना, उसको टाइप करना है. ठीक है. क्योंकि वो 4-5 लोगों के नाम बोल रही. अब mutual fund. तो नहीं बोला तू नया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, पब्लिक Angel, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक. समझ आ रहा है? angel पेंशन fund. फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी के फंड. ये सब कौन है? ये बड़े बड़े इन्वेस्टर है. करेक्ट. ऑल दीज आर टू बी टेकन एज व्हाट? अरे ये सब लोग कौन है? QIB. बी.
बी। करेक्ट है, ये है क्यू आई बी। और ये क्यू आई बी को जब हम देंगे शेयर तो वो क्या बन जाएगा, क्यू आई क्यू आई पी पी। बन जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ो पहले, क्वालिफाइड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन। qualified placement means issue of eligible securities by listed issuer to a qualified institutional buyers on a private placement basis आराम and से, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस का क्या मतलब, हम ये आम जनता को नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ इतने ही लोगों को बेचेंगे जो अपने नोन पार्टी हो गए। क्या सही है? बिल्कुल रिस्क है। हाँ, तो इसलिए क्या करने के लिए बोला है, पहले स्पेशल रेशन पहले उनको ही मालूम होना चाहिए। अगर उन्होंने हाँ बोला एग्जिस्टिंग होल्डर ने, जिनका कंट्रोल चले जाने वाला है, तो ही तुम क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हैं इशू कर क्यू आई सकते पी। हैं क्यू आई बी को। वेरी गुड। सेकेंड, बोलो। Proposed allotment. हम्म The equity shares of the same class which are proposed to be allotted through qualified institution placements or pursuant to conversion or exchange of eligible securities offered through qualified institution placement have been listed on the stock exchange for a period of at least वगैरह 1 year. वगैरह, at least 1 year indirectly means what, suppose you got first equity shares and you are going to issue preferential share as QIB। तुम्हारी कंपनी में पहले क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर है, और तुम प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या देना चाहते हो, QIB को देना चाहते हो, तो क्या ऐसा चलेगा? तो आंसर है नो। तुम्हारे पास अगर पहले से इक्विटी शेयर है तो QIB को भी क्या देने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर ही देने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे शेयर जो 1 साल से तुम्हारे पास पड़े हैं, वैसे ही शेयरों का तुम क्या दे सकते हो, QIB दे सकते हो। मगर तुम्हारे पास QIB भी है, QIP भी, सॉरी इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंशियल भी है, दोनों शेयर है, तो क्या अभी तुम्हें प्रेफरेंशियल शेयर दे सकते हो? नहीं सर, इक्विटी देंगे सर पहले। अरे नहीं, अपने पास अभी दोनों है, इक्विटी भी है और प्रेफरेंशियल भी है। वी गॉट बोथ काइंड ऑफ शेयर्स। अरे अगर तुम्हारे पास दोनों शेयर है तो इसमें से तुम कुछ भी दे सकते हो, मगर अगर अगर तुम्हारे पास सिर्फ इक्विटी है तो तुम सिर्फ इक्विटी ही दे सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंपनी के शेयर में भी क्या अलग अलग टाइप होता है, हाइब्रिड सिक्योरिटी, नो वोटिंग सिक्योरिटी, शेयर्स विद सुपीरियर राइट्स। क्या शेयर्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं? हाँ होते हैं सर। तो जो तुमको देना है QIB को, वो ऐसे शेयर होने चाहिए जो पहले से ही तुम्हारे पास है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे समझ आ रहा है क्या? ऐसे शेयर दो जो तुम्हारे पास पहले से ही है, मतलब नए शेयर तुम नहीं दे सकते। ओके अमन, हाँ ना कुछ तो बोल। हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, चल एकदम डायरेक्ट ये पढ़। सर सी पढ़ना है सी। हाँ, An issuer shall be eligible to make a qualified institution placement if any of its promoters or directors is not a fugitive economic offender. क्या वही आ गया वापस? हाँ जी। आगे, all eligible securities issued through qualified institutional placement shall be listed। All करेक्ट, मैंने बोल दिया कि जो भी तुम ये QIB को दोगे, वो भी शेयर को क्या करवाना है तुमको, लिस्ट करवाना है। मतलब कल चाहे तो आम आदमी भी ये ले सकता है। क्या सही है? yes, sir. यस। और लास्ट का बोल। The issuer shall not make any subsequent qualified institutions placement until the expiry of 2 weeks from the date of the prior qualified institutions placement made pursuant to one or more special resolutions. इसका क्या मतलब हुआ कि आज तुमने पैसे की जरूरत थी, तुमने वो ए लिमिटेड को बेच दिए शेयर 500 करोड़ के, और तुमको कल फिर से पैसे की जरूरत आई, तो क्या कल फिर से QIB को कर सकते हो प्लेसमेंट? तो आंसर है नो। लॉजिक क्या है कि दो QIB के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, 2 सप्ताह का। 2 सप्ताह का। इसका मतलब 15 दिन तो जाने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, जब तुम्हें पैसा चाहिए तो इमीडिएटली QIB ऐसे लाइन में नहीं निकालने, पहला जो होने दो, 15 दिन रुको, फिर दूसरा निकालो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गैप होना चाहिए। वेरी गुड, गैप होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज IPO बाय इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ये आसान है। IDR हो गया, ये हमने देख लिया। इनोवेटर ग्रोथ भी देख लिया। बोनस है, बोनस का समझना आसान है, और ये टॉपिक ही खत्म हो गया। वेरी गुड। अभी समझ आ रहा है तुमको थोड़ा थोड़ा? हाँ जी। वेरी गुड। एक तो बार अभी सर
रीडिंग करना पड़ेगा सर। ऑफ कोर्स अरे मैं मेरे तो हिसाब से 3 बार रीडिंग करना पड़ेगा। हमारे हाँ जमाने जी में हाँ हम जी 5 बार रीडिंग करते थे, पहले पढ़ते थे, अंडरलाइन करते थे, नोट्स निकालते थे, फिर से रीड करते थे, नए पॉइंट ऐड करते थे, फिर पेपर देखते थे क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर उसका सिर्फ रीडिंग करते थे। ऐसा करते जाओगे तभी वो समझेगा। एक बार पढ़ के तुम पेपर नहीं लिख सकते प्रोफेशनल एग्जाम के, क्या सही है? हाँ सही है। वो तुम्हारा नसीब है। अगर तुमने अभी मैंने जो तुझको पढ़ाया वही पेपर में आ गया तो शायद से तू एक पढ़ाई में लिख सकता है, मगर क्या पूरा पेपर ऐसा हो सकेगा कि जो हमने डिस्कस किया वही आ गया उधर? नहीं सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो वी विल हैव अ ब्रेक एंड देन विल गो फॉर अदर रेगुलेशन। क्या पढ़ना है हमको? एलओडीआर पढ़ना है तो एलओडीआर पढ़ते हैं। क्या सर एक पढ़ना है चीज तुमको? हाँ बोल ना। सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे क्या नाम है, ये वेबसाइट